हाय टू ऑल। आज हम एक MCQs की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, फिज़िकल रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड ना। ये MCQs आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, लाइक PPSC, Ppsc, DHA, HAAD, MO or NPT or whatever exam you go for. Okay, now start with. सबसे पहले देखते हैं कि रिलीज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए मेडिकल रिकॉर्ड विदाउट द पेशेंट कंसेंट इज इलीगल इफ इट इन्वॉल्व्स द पेशेंट्स एम्प्लॉयर। ऑप्शन बी क्या है, अनदर थेरेपिस्ट इन्वॉल्विंग पीयर रिव्यू, द पेशेंट्स इंश्योरेंस कंपनी और अ सोशल वर्कर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, द पेशेंट्स एम्प्लॉयर। नेक्स्ट MCQs ये देखें। You are evaluating an athlete who is complaining of pain in left shoulder region. Your examination of the shoulder elicits pain in the last 30 degree of the shoulder abduction range of motion. This finding is most congruent with the number A option है telescopic supraspinatus tendonitis, B क्या है subacromial bursitis, C is acromioclavicular sprain and D is thoracic outlet syndrome. According to scenario, the correct option is C, acromioclavicular sprain, because its pain is most common in last 30 degree of the shoulder abduction range of motion. Next, following a CVA, cerebrovascular accident, involves the dominant right hemisphere. Okay, a patient exhibiting unilateral neglect would generally not A, eat food only from the right side of the plate, B, pump a one-arm driver wheelchair into things on the left side, C, ignore or deny the existence of the left-sided limbs, and D, shave or put makeup only on the left side of the face. Basically, the patient is not able to shave or put makeup only on the left side of the face because the damage is on the right hemisphere. Next, a patient with spastic left hemiplegia experiences recurvatum during stance phase. Okay, recurvatum means hyperextension. If the patient is used an ankle foot orthosis, okay, the cause of the problem might be attributed to A, not enough limitation by the posterior stop, B, not enough limitation by the anterior stop, C, too much limitation by the posterior stop, D, too much limitation by the anterior stop. तो correct option क्या है? Not A, not enough limitation by the posterior stop. Why? Because recurvatum है और पेशेंट को कंट्रोल ही नहीं मिलेगा जब posterior stop से। तो फिर next, in a physical therapy department, there is a statement that reads, all patients should be managed using appropriate standard precaution. This kind of statement would most likely be found in the quality assurance manual, policy statement, procedure manual, standards of practice. तो correct option क्या हुआ? Policy statements. Option B is correct option. Okay, next. You are examining a 71-year-old male who has a recent history of falls while ambulating on level surface. Okay, interaction with the patient indicates that cognition is unaffected. Which of the following should be performed next? Next, we perform sensory testing. Correct option is sensory testing. All other options are irrelevant, like A is saying static and dynamic balance testing, B is saying gait analysis, D is saying reflex integrity, but correct option is sensory testing. Next, teaching pursed lip breathing as part of the treatment regime would be the most appropriate for a patient with option A, circumferential thoracic burns, B, asbestosis, C, radiation pneumonitis, D, emphysema. तो करेक्शन क्या है? emphysema. बेसिकली हम जो पर स्लिप ब्रीदिंग है ना, ये टेक्निक किसको टीच करते हैं? emphysema के पेशेंट में. Okay, next, if the patient with an above knee prosthesis has a prosthetic foot with the plantar flexion bumper that is too hard during ambulation, the prosthesis will rotate internally at heel strike.
बी ऑप्शन क्या है, पोस्टीरियर फुट वुड रिमेन डॉर्सीफ्लेक्स ड्यूरिंग द गेट साइकिल। सी ऑप्शन क्या है, प्रोस्थेटिक फुट वुड रिमेन प्लांटफ्लेक्स ड्यूरिंग द गेट साइकिल। डी ऑप्शन क्या है, प्रोस्थेटिक फुट वुड नॉट फ्लेक्स सफिशिएंटली ड्यूरिंग स्टैंस फेज। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है बी। बी कैसे कि प्रोस्थेटिक फुट वुड रिमेन डॉर्सीफ्लेक्स ड्यूरिंग द गेट साइकिल, बिकॉज जो पेशेंट है विद एन अबव नी प्रोस्थेसिस हैज अ पोस्टीरियर फुट विद अ प्लांटर फ्लेक्शन बम्पर है, ठीक है। तो जो है बेसिकली उसका बम्पर होगा प्लांटर फ्लेक्शन में, तो वो जो पेशेंट का फुट रिमेन रहेगा डॉर्सी फ्लेक्शन में जब गेट साइकिल में। नेक्स्ट, prior to performing manual traction in the cervical region, one should perform a test for vertebral artery insufficiency in order to ascertain the adequacy of blood supply to the vertebra. बी ऑप्शन है अपर एक्सट्रीमिटी, सी ऑप्शन है स्पाइनल कैनाल, डी ऑप्शन है ब्रेन स्टेम। तो करेक्ट ऑप्शन है डी ब्रेन स्टेम, क्योंकि जो वर्टिकल आर्टरी है वो ब्रेन स्टेम से बेसिकली पास करती है, तो इनसफिशिएंसी हो जाए तो उसकी जैसे इनएडिकेसी हो सकती है ना ब्लड सप्लाई में, साइन सिम्टम्स आ सकते हैं उसके। अच्छा नेक्स्ट, अ स्नोमोबाइल लेफ्ट द ट्रायल एंड स्ट्रोक कटी, ओके। The driver's left knee was fully flexed and tibia impacted with the inside foot of the snow wall. ठीक है, this mechanism of injury would most likely result in a dislocated patella, B sprained or ruptured posterior cruciate ligament, C sprained or ruptured anterior cruciate ligament, D rupture of the popliteal artery. तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्प्रेन और रप्चर ऑफ द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, क्योंकि पेशेंट की नी फुली फ्लैक्स है, ठीक है, और जब वो हिट करती है ना, इम्पैक्ट करती है विद इनसाइड फ्रंट ऑफ द स्नो मोबाइल, देन रप्चर हो जाता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का। अच्छा, अब देखते हैं, पेशेंट विद द ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन ऑफ 2 months ड्यूरेशन कंप्लेन्स ऑफ यू of intense burning pain that seems to emanate from his heels. This phantom pain mirrored preoperative pain which was the result of the previous damage to the option A dorsal pedis artery, option B popliteal artery, option C peroneal artery, option D tibial nerve. तो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली होगा टिबियल नर्व, ठीक है, क्योंकि हील की तरफ से जो है वो पेन जो जा रही है वो बेसिकली टिबियल नर्व की है, नॉट आर्टरी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी हैज फाउंड that 72% of the inpatients receiving physical therapy showed no improvement in function. To discover the cause of this high rate, it would be best if the committee checks the source of the referral, B क्या patient diagnosis, C appropriateness and consistency of the physical therapy services, D age of the patient. तो basically correct option क्या है इसके लिहाज से, C appropriateness and consistency of the physical therapy services. Next, to prepare a patient with a cauda equina lion from ambulation with crutches, the upper quadrant muscle that would be the most important to strengthen would be the A ऑप्शन क्या है trapezius, rhomboids, levatus, scapulae, D B क्या है deltoid, brachialis and brachialis, C middle trapezius, serratus and triceps, D ऑप्शन क्या है lower trapezius, latissimus dorsi and pec major. These muscle, D option is correct because these muscle is more important to strengthen while a patient come to you with cardiac canalian and ambulation with crutches. तो हम क्या कहेंगे कि लोअर ट्रेपीजियस को हमने स्ट्रेंथन करना है, लेटिसिमस डॉर्साई को स्ट्रेंथन करना है एंड पेक मेजर को मसल को स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज लेटिसिमस डॉर्साई जब पुश बैक करेगा ना पेशेंट, उसके साथ चलेगा, क्रचिस के साथ वॉकिंग पैटर्न होगा, तो ये मसल स्ट्रांग होंगे तो ही जो है ना वो फर्दर कंटिन्यू कर सकेगा ना। अच्छा ये देखें, बेस्ड ऑन द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल राइट MR images of the shoulder, the physical therapy plan of the care should be formulated based upon an initial diagnosis of A rotator cuff tear, B a C joint sprain, C osteoarthritis, D acute fracture. So this clear cut shows A option A is correct, rotator cuff tear. अच्छा next, you have been treating a 61 years old woman over a period of 4 months for adhesive capsulitis which has resulted in a frozen shoulder. Her recovery has been good. However, she still complains that she cannot reach the upper shelves in her kitchen cupboards and closets.
टू हेल्प हर अचीव दिस गोल जॉइंट मोबिलाइजेशन शुड फोकस ऑन, हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए है इंफीरियर ग्लाइड, ऑप्शन बी है पोस्टीरियर ग्लाइड, ऑप्शन सी है एंटीरियर ग्लाइड एंड ऑप्शन डी है ग्रेड 2 ऑसिलेशन। बेसिकली हम यूज़ करेंगे ऑप्शन सी एंटीरियर ग्लाइड, क्योंकि पेशेंट एबल नहीं है ना, अनएबल है ना, रीच नहीं कर पा रहा अपर शेल्फ्स जो किचन में कबर्ड्स की हैं, जो भी आप लोग भी घरों में काम करते हैं तो उस सिनेरियो को मद्देनज़र रखें। तो बेसिकली उसमें एक्सटर्नल रोटेशन इन्वॉल्व होती है ना, और जो ओवरहेड हम कह लेंगे एब्डक्शन जब करता है पेशेंट तो एक्सटर्नल रोटेशन इन्वॉल्व होती है, तो उसके लिए एंटीरियर ग्लाइड हम बेसिकली देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच एक्टिविटी would not help to break up lower extremities energy combination in a patient with hemiplegia? तो ऑप्शन ए क्या है? बैलेंस ट्रेनिंग इन अ kneeling पोजीशन। बी ऑप्शन क्या है? बैकवर्ड लेग लिफ्ट्स विद द नी एक्सटेंडेड ऑन द अफेक्टेड साइड। सी क्या है कि ब्रिजिंग इन द हुक लाइन पोजीशन। डी क्या? रोलिंग फ्रॉम अ हुक लाइन पोजीशन। बेसिकली करेक्ट ऑप्शन इज बी, बैकवर्ड लेग लिफ्ट्स विद द नी एक्सटेंडेड ऑन द अफेक्टेड साइड। दिस एक्टिविटी बेसिकली वुड नॉट हेल्प टू ब्रेक अप द लोअर एक्सट्रीमिटी सिनर्जिक कॉम्बिनेशन अगर पेशेंट को हेमिप्लीजिया हुआ है। अच्छा, a new student physical therapist and her supervising therapist are overwhelmed by sudden increase in the number of new patients attending a group of the exercise class. In this situation, it would be best to ऑप्शन क्या है? ए है कि कैंसिल द क्लास एंड रीशेड्यूल द न्यू पेशेंट फॉर इंडिविजुअल एग्जामिनेशन। बी क्या? allow the students to conduct the class while the supervisor examines the new patient. C क्या? allow the student to assist in an appropriate way with the management of the class. D क्या? assign the student to less busy therapist while the supervisor concentrates on managing the class. Basically option correct option क्या है? C, allow the student to assist in an appropriate way with the management of the class. अच्छा देखिए, इन मैनेजिंग द रेजिडुअल लिम्ब ऑफ ए 72-year-old patient with a transfemoral amputation, the most important factor to consider is ऑप्शन ए है कंट्रक्चर ऑफ हिप मस्कुलेचर, बी क्या? रेजिडुअल लिम्ब शेप, सी क्या? मस्कुलर एट्रोफी, डी क्या? रेजिडुअल लिम्ब हीलिंग। तो बेसिकली हम कहेंगे कि जो है ना एक रेजिडुअल लिम्ब 72 ईयर्स पेशेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने क्या कंसिडर करना है? उसकी हीलिंग पे फोकस करना है कि रेजिडुअल लिम्ब की हीलिंग हो चुकी है कि नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अच्छा, 3 months following traumatic injury to the hand which had resulted in the surgical tendon repair and fracture stabilization, a physical therapist is planning a treatment program to address tightness of the umbilicals. Exercise to increase range of motion will be best utilized if both MCP and IP joint are moved into flexion. B क्या? both the MCP and IP joints are moved into extension. C क्या? MCP joints are extended and IP joints are flexed. ठीक है, MCP joints are flexed and IP joints are extended. Basically correct option is correct option C, the MCP joints are extended and the IP joints are flexed. Okay, अच्छा जी, a 54-year-old male with a long history of cigarette smoking है ना, cigarette smoker है patient, has been admitted to a hospital and present with signs of infection, tachycardia, abnormal breath sounds in both lower lobes and dullness to percussion. The physical therapist major concern and focus with the patient is option क्या है? A क्या? setting the patient to quit smoking. B क्या? breathing re-education to increase efficiency of ventilation. C क्या? airway clearance and secretion removal. D क्या? graded inspiratory muscle training. तो हमारा मेजर कंसर्न क्या होना चाहिए फिजिकल थेरेपिस्ट का? airway clearance and secretion removal. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? C. अच्छा जी, a patient with adhesive capsulitis of glenohumeral joint should demonstrate the greatest limitation of motion when performing shoulder flexion. B abduction, C medial rotation, D lateral rotation. अगर हम कैप्सुलर पैटर्न के लिहाज से भी देखें ना, तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के लिए फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले जो मूवमेंट लिमिटेड होती है ना, वो होती है लेटरल रोटेशन. करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन डी. अच्छा जी, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट सेशन इन अ रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, अ पेशेंट आस्क्स द फिजिकल थेरेपिस्ट असिस्टेंट टू लेट हिम सी द फिजिकल थेरेपी प्रोग्रेस नोट इन हिज मेडिकल रिकॉर्ड. ठीक है, फिजिकल थेरेपिस्ट असिस्टेंट शुड क्या करता है कि ए refuse to let the patient see the record, B allow the patient to see the notes, C get the permission of physical therapy supervisor before giving the patient the chart, D क्या contact the patient physician and explain the situation. तो correct option है option B, allow the patient to see the notes. अच्छा जी,
If a patient chest tube gets dislodged during physical therapy treatment, okay, the therapist failed to cover the defect, the patient could develop A क्या है pulmonary embolism, B क्या है pulmonary edema, C क्या है pneumothorax, D क्या है aspiration pneumonia. बेसिकली जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो हमेशा करेक्ट ऑप्शन होगा C pneumothorax, क्योंकि चेस्ट डिसलॉज हो जाएगी, ठीक है, तो जो है ना वो एयर भी कलेक्ट हो सकती है थोरैक्स में. और falling or motor vehicle accident, a patient with chest trauma develop atelectasis. To help in the immediate management of the atelectasis, it would not be appropriate to implement A. pain reduction techniques, B. segmental breathing, C. incentives spirometry, D. paced breathing. Basically हम paced breathing ना इस तरह के पेशेंट में हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. अच्छा जी, नेक्स्ट. Following a reattachment of the flexor tendons of the fingers, one physical therapy goal is to minimize adhesion formation. Only a few days after surgery, with the patient in a splint, the physical therapist should teach the patient to perform A. passive extension and active flexion of the interphalangeal joint, B. active extension and flexion of the interphalangeal joint, C. active extension and passive flexion of the interphalangeal joint, and D ऑप्शन क्या है कि gentle passive extension and flexion of the interphalangeal joint. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी. बेसिकली हम पेशेंट को टीच करेंगे एक्टिव एक्सटेंशन एंड पैसिव फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेरेंशियल जॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी, जब पेशेंट सप्लेंट में होते हैं. ओके, थैंक यू. अब हम नेक्स्ट सीरीज भी इंशाल्लाह मैं ऐड करती रहूँगी एमसीक्यूज़ की, तो जो है ना लाइक इसी से रिलेटेड कभी कुछ मैं जनरल नॉलेज के भी ऐड करूँगी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर. आई विल आल्सो ऐड MCQs रिलेटेड टू एनाटमी, फिजियोलॉजी, रिसर्च, मेजर कंसर्न, फिजिकल रिहैब से रिलेटेड भी ऐड करते रहेंगे, ठीक है. तो ये आपको बड़े हेल्पफुल होंगे, बट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.